Hello everyone, good morning. So आज हम खत्म करेंगे अपना वक्त बैकग्राउंड डिजाइनिंग और फिर कैरेक्टर डिजाइनिंग का सेशन होगा। तो इसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ। यू नो एक बार चेक कर लेती हूँ कि लाइव से चल रहा है या नहीं। और ये रहेगा आज हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक। कॉपीराइट आ जाएगी ना बैकग्राउंड म्यूजिक में। अब यही सही रहेगा। बार बार कॉपीराइट आ जा रहा है क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ, कोई भी गाना चला दे रही हूँ। सो कहाँ गया फ्रेंड गेम्स। सो बेसिकली कॉपीराइट आ जाएगी ना बैकग्राउंड में। चलो चल ही रहा है। कॉपीराइट आ जाएगी ना, राइट आ जाएगी ना। यू नो एक बार चेक कर लेती हूँ। सो चेक हो गया है। सो बेसिकली हमने क्या क्या किया था। सो यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। वेट, आई एम हैप्पी। आज हम लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड कैसे, लास्ट टास्क क्या था, टास्क। तो यहाँ पे हम गूगल कीप पे जाएंगे और देखेंगे हमारा टास्क आज का लास्ट बचा है ग्रीन एसिड वाटर एनिमेशन। कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी अपनी मजबूरियां थी, और क्या मजबूरी थी मुझे याद भी नहीं है। कल मुझे टाइम मिला ही नहीं। हाँ, टाइम ही नहीं मिला। कल इतना उथल पुथल हुआ था सब चीजें। जैसे कूलर बनवाना था, मम्मी को गांव जाना था। मम्मी चली गई शादी में, वैसे माँ बाप चले गए शादी में। अब आएंगे वो लोग एक हफ्ते बाद, इसलिए उथल पुथल हुआ था। अब देखो मेरी हालत खराब होगी काम वाम करने में, ऊपर से बाहर के कुत्तों को भी खाना देना है, घर में भी अपने लिए खाना बनाना है, बस और क्या ही है। आज शायद कोचिंग आ जाऊं मैं, कंप्यूटर क्लासेस। सर बता देंगे वैसे भी, क्योंकि सर ने क्या कहा था, C++ में अभी सीख रही हूँ। तो सर ने, देखो मैं सीख तो सकती थी यूट्यूब से भी, ओके, लेकिन मुझे सोशल होना था। तो मैं सोशल होने के लिए चली गई क्योंकि मैं घर में पागल हो गई थी, यू नो। सो बेसिकली हमने क्या क्या किया, हमने इसे बनाया था। कल हमने, परसों हमने क्या किया था, हमने पोल पोल को हमने इसमें ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन किया था। और उसके लिए हमने क्या यूज किया था, क्या यूज किया था, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। और इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्म डॉट ऑफ कोर्स पोजिशन यूज किया। इसके लिए रोटेट यूज किया था, कैपिटल में आर रोटेट, और इसके लिए रोटेशन। और कैपिटल में आर रोटेट को यूज करने से, ट्रांसफॉर्म डॉट कैपिटल में आर रोटेशन को यूज करने से ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मूव करता है। सो हमने इसे मूव भी करवाया था। इसमें हमने मैथ ऐप डॉट सीन यूज किया था, ताकि ये हम एक ही वैल्यू देकर उसे लेफ्ट एंड राइट मूव करवा सके स्मूथली, रिपीटेडली। लेकिन इसे इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट को इटसेल्फ मूव करवाने के लिए हमने यूज किया था दूसरा, ट्रांसफॉर्म डॉट कैपिटल आर रोटेट। चलो आज का हमारा काम है वाटर ऐड करना, यहाँ पे वाटर लिक्विड ऐड करना। कि मान लो यहाँ से बॉल आता है, फायर होता है, इसमें गिरता है तो वो जल जाएगा। हाँ ठीक है। और वो जलने वाला एनिमेशन तो हमें उसी में बनाना है जब हम कैरेक्टर को बनाएंगे। आज अगर मैं 1 घंटा भी काम कर लेती हूँ ना तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना है। मम्मी है नहीं घर पे, एक हफ्ते नहीं रहेगी। तो अगर मैं दिन भर में 1 घंटे भी काम कर लेती हूँ यूनिटी पे, तो आई विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। अभी वुडन खटोला लेकिन अभी वो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें टेंशन लेनी है तेजाब की। उसके लिए बनाना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, मतलब कि वाटर बाहर ना जाए। वाटर बाहर कैसे जाएगा, उसके लिए तो एनिमेशन बनाना होगा ना। मेरे पास क्रीटा है, क्रीटा से हम लोग एनिमेशन बना लेंगे, और बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है एनिमेशन। तो हमने इतना सब कुछ कर दिया। मुझे बहुत ही प्राउड हो रहा है खुद पे ये चीज देख के कि मैंने इतना कर दिया। आई एम फीलिंग फकिंग प्राउड।
ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे भी थोड़ा सा छोटा सा कर देते हैं, छोटा सा, इसे भी ऐसे कर देते हैं, फिर भी ऐसे कर देते हैं। अब मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ अभी बताऊंगी, पहले देख लो। सही है, मतलब यहाँ तक आए, मतलब यही, इससे ज्यादा ऊपर ना जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइन भी लगा दूंगी तो दिखेगा नहीं, इसे बस मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, नीचे नीचे थोड़ा सा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ। लाइन क्या लगा, लोहा लगा दे क्या ऊपर, अच्छा ढकने के लिए। एक एक दीवार सा लगा देती हूँ। देखते हैं शूट करता है या नहीं। इमेज में जाते हैं, इमेज में इंपोर्ट करते हैं। मैं पता नहीं, अंदर से बहुत ही थकी थकी फील कर रही हूँ मैं आज, और नींद भी बहुत अच्छी आई थी, मतलब इतने दिन बाद तो मुझे अच्छी नींद आती है, बहुत मुश्किल से नींद आती है ना। इसे ले लेते हैं, अरे यार इसे ले लेते हैं, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। ये आइडिया सही है भी या नहीं, वी डोंट नो, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक इज इट नाइस आइडिया और नॉट। मैं इसे रख देती हूँ। फोन पे रखना पड़ेगा। ये सही है, ओके मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। असल में क्या होगा कि जब मैं दूसरा फ्लोर बनाऊंगी तो काम आएगा इसमें। मे भी ये बेस्ट आइडिया नहीं है, बट स्टिल देखते हैं कि क्या होता है, यू नो। पता तो नहीं लग रहा, यू नो, मैंने डार्क कर दिया, इससे थोड़ा और डार्क कर दिया। हाँ अब सही लग रहा है, नहीं, नाउ इट्स बेटर, लेट मी सी इज इट बेटर और नॉट। मैं पानी ऐड कर दूंगी, पता तो चलेगा नहीं, फिर भी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ज्यादा ही ऊपर चला जा रहा है। अरे हाँ मैंने रैंडम लगाया ना, ऑफ कोर्स जाएगा ये। स्पीड को मैं सेम नहीं रख सकती, इट्स बेटर, बट अब मुझे इसे थोड़ा सा नीचे करना होगा। ओके इट्स बेटर नाउ। पता तो नहीं लग रहा, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे लिक्विड ऐड कर देंगे, और ज्यादा छुप बड़ा तो लिक्विड ऐड करना नहीं है हमें, लिक्विड इसी नीचे छुप जाएगा। हाँ लिक्विड, तो लिक्विड का तब तक एनिमेशन बनाते हैं, और ज्यादा नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लिक्विड के एनिमेशन में। लाइक क्या ही करना है, बस ऐसे ऐसे कर देना है, फिर ऐसे ऐसे कर देना है, दैट्स इट। और उसके उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी है, क्या कहते हैं,
एनिमेशन टैबलेट मेरे पास ऑलरेडी है एनिमेशन बनाने के लिए, ड्राइंग टैबलेट। दैट्स लिटरली लुकिंग सो गुड, fucking good. Yes. हाँ सच में यार मुझे ज्यादा लाइव करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किया नहीं था, सो मैं आ गई। मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, चाहे मन करे या ना करे, आना चाहती हूँ। I just don't want to procrastinate. उसका नाम रख दे क्या? पता नहीं मेरी बॉडी इतनी थकी हुई क्यों है। चलो बनाते हैं एनिमेशन, और इसमें एनिमेशन भी लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे वो मुझे नहीं पता, बट वी विल फिगर इट आउट बिकॉज़ दिस चैनल इज ऑल अबाउट फिगरिंग थिंग्स आउट, लर्निंग एंड ऑल। बस मैं वेट कर रही हूँ कि जिस दिन मुझे यूनिटी पे गेम बनाना 2D एंड 3D आ गया, तब मैं एआई से जो खोऊंगी ना, लाइक मैं एआई को दमदार यूज करूंगी। मैं फिर एआई को यूज करके एकदम मस्त गेम बनाऊंगी। यही मेरा गोल है, पहले सीख लो, खुद बनाना सीख लो, खुद कैपेबल हो जाओ, फिर एआई को यूज करूंगी दमदार। अदरवाइज व्हाई आई विल वेट दैट मच। यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं। नो 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 यू प्लीज डू सॉरी। सेव, पहले इसका नाम रख दूं क्या? सेकंड बॉल, इसका नाम रख देते हैं सेकंड बॉल, ये काम आएगा। सेकंड बॉल, ओके मेरे सेव करते हैं, और देन वी हैव टू ओपन व्हाट क्रीटा। पहले एक बार use Discord for our play. No. Fucking hell. Create. I want animation. ये भूल चुकी हूँ मैं, इसे कैसे छोटा करूँ मैं? यहाँ पे साइज, ओके। I just forgot everything. इसे करते हैं, एनिमेशन में जाना है, ओके। पता नहीं, अब जब भी अब देखती हूँ ना इसे, मन करता है कि यार फिर से करती। अब एनिमेशन बनाने का मन करता है। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक तो नहीं लेना, हमें क्या लेना है? ब्लू। वेट, कलर कैसे ऐड करते हैं? मैं भूल गई। I forgot everything. इस कलर का रहेगा नहीं? हाँ, इस कलर का रहेगा लिक्विड, वैसे थोड़ा सा लाइट रहेगा। So we are gonna take little lighter, फिर कैपेसिटी यहाँ पे रखते हैं और कंफर्म करते हैं। मैं सर में दर्द हो रहा, करने का मन नहीं कर रहा, but still we have to do this. आज इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर कल का देखेंगे। आज मैंने रोब्लॉक्स का बेसिक का प्रैक्टिस कंप्लीट किया। मैंने बेसिक सीखा हुआ था, रोब्लॉक्स का बेसिक स्क्रिप्टिंग सीखा था, उसमें लुआओ भी सिखा दिया था उसने बेसिक में, और बेसिक स्क्रिप्टिंग भी सिखाई थी। तो उसका मैंने 5-6 दिन से मैं उसी चीज को अलग अलग तरीके से ब्रेक कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, ऐड कर रही थी, ताकि जब मैं एडवांस स्क्रिप्टिंग सीखने आगे बढ़ूं तो मुझे थोड़ा मोड़ा बेसिक पता हो। तो मुझे बेसिक पता चल चुका है। अब मैं मूव कर रही हूँ रोब्लॉक्स के एडवांस लर्निंग पे, एडवांस लुआओ प्लस स्क्रिप्टिंग पे। उसके बाद
मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं खूब सारा प्रैक्टिस करूंगी गेम्स की, खुद का गेम बनाऊंगी एआई का यूज करके, क्योंकि मेरे पास बेसिक, उसके बाद मुझे तो आ ही जाएगा कि गेम कैसे बनाते हैं। उसके बाद दमदार एआई का यूज करके गेम्स बनाऊंगी। पहले एडवांस स्क्रिप्टिंग सीख लूंगी, एडवांस स्क्रिप्टिंग सीखने के बाद कुछ गेम्स खुद से बनाऊंगी, खुद से स्ट्रगल करूंगी, जब मुझे पता चल जाएगा कि अब मैं कोई भी गेम बना सकती हूँ, तब एआई का यूज करूंगी, दमदार गेम्स बनाऊंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड यू नो। लेकिन अभी तो वो दिन 1.5 महीने बाद आएगा, क्योंकि डेली एक एक वीडियो करके मैं आगे बढ़ूंगी, वरना बहुत ही ओवरवेल्म हो जाएगा। साथ में वीडियो उसी करेंगे। Hey dude, now I want to situation like there acid water so no, you don't need animation as animation for acid water. You don't need a script shader or basic acid water. Just sprite with a wavy shader, for 2D, or just move the sprite slightly upside down using same sprite. No यार, पागल है क्या? कितना गंदा लगेगा, छी। Use a sprite and wavy shader onto acid to move wave. No यार, move wave, script or shader. Damage player and a collider to set a trigger. Local SS sprite set. You don't need I want looping effect. Set trigger. I want water waves and move and even and player that acid to give bubble and then double. It's fucking easy. Just yes, little choice. Good for looping water waves, spreadsheet with frames. Bubble popping, frame by frame or particle system, visual coalition, like wellness water wave. What do you want? Best meta wave moving shader, building simplest animation, particle system, and effect. कर सकते हैं तो देखते हैं। For damage effect, when player touches acid, you don't need full damage animation. You can flash them
प्लेयर रेड तो कर देंगे, ये कर देंगे प्लेयर साउंड रिड्यूस हेल्थ पुश। ओके वी डन प्लेयर रेड। अच्छा तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। प्लेयर साउंड तो ये कर ही लेंगे, रिड्यूस हेल्थ भी कर लेंगे, पुश प्लेयर बैक भी कर लेंगे। ऐसे थोड़े प्लेयर डैमेज इफेक्ट should enjoy anything for it fan water favorite 48 frame। सर्च करके देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है ये। हाउ टू अच्छा इतना अच्छा है तो देखते हैं क्या है। The water in your Unity game, use Unity water system. Here is my empty project. Let's add a new object, water, then तो यहाँ से भी मतलब बना सकते हैं, तो हम लोग तो यूनिटी यूज करेंगे फिर तो। Here we are. Please check my full video and you will learn why. How to add water to your 2D game. Let's say you want to add water like from Kingdom to Craft. First, you have to render your scene with a second camera and then reflect it onto your water plane in a shader. Then add a noise texture for water flow and distortion. Now to create a top-down water, it's a bit more complicated. Which comes with two types of water. One is more realistic with these beautiful reflections. The other is more simplistic and cartoonish. Both waters work on the same principles. They have a bunch of springs and you can actually play around with a lot of different values to control how they react. To get started, click on the link in the description below, sign up, and you will get a link in your inbox with access to all of my free assets every single month. Click on the 2D water, click download, and now it's time to import the package. Once installed, you will see a new 2D water folder. There you will find the prefabs folder, which contains the two types of water. Simply drag and drop the water into your scene and you should be ready to go. If you don't see your water, it's probably displaying on the wrong sorting layer. You can change that in the mesh renderer component. Make sure you type in the correct name of the layer and also the correct sorting order. The dynamic wave settings affect how the water reacts to objects colliding with its surface. You can turn it on or off. The constant waves can also be turned on or off. Sign up and you will get a link in your The other is more simplistic and cartoonish. Both waters work on the same principles. They have a bunch of springs and you can actually play around with a lot of different values to control how they react. To get started, click on the link in the description below, sign up, and you will get a link in your inbox with access to all of my free assets every single month. Click on the 2D water. तो चलो यही यूज करते हैं। वेट मैं इस चीज से थोड़ा छुपा देती हूँ। मैं अभी जा नहीं रही, बस आई एम जस्ट हाइडिंग इट फॉर later. Email की check here.
एक तो ये आ ही नहीं रहा। हाँ नहीं आ रहा गाइस, लगता है खराब हो चुका है। इंटरव्यू एंड बता दो, मुझे ये वाला चाहिए। मैं सही से नहीं यहाँ से वही वाला सर्च करते हैं, 2D यूनिटी वाटर। Why so much money, dude? मेरे पास नहीं है 25। I don't have money. Free ऐसे सकते हैं ना? What is it? Hey guys, welcome. Ever since I first played Ori and the Blind Forest, I have desperately wanted to learn how to create 2D water that interacts with my player. And I'm not going to pretend that mine is as nice as Ori's, but I am really happy with the end result. I might tackle swimming in a future video, but the focus for this tutorial is just getting the water to look good and get it interacting with my player. So right now, just pretend he's swimming and not just jumping around normally. Ready? Let's go. I actually want to show you an approach I tried at first and ended up scrapping, so you'll understand why we're doing this the way that we're doing it. I'm the most comfortable working in 2D, so creating a mesh and working with that is not something that really appealed to me. So I went with a sprite shape approach where I can control these spline points and move them around to form little waves, and it looks pretty good. But to my horror, as soon as I wanted to add a little edge along the top of the water here, that's when I ran into issues. You can see the waves actually cut the line off. Then even worse, I tried adding some noise along the top of the UV to create little waves that would always be there, and that already wasn't working well, and clearly it did not interact very nicely with my wave code, and everything just looked weird. But if you don't care about using really fancy shaders on your water, then this is a fairly simple approach that's pretty performant because there's literally just 8 points here that need to be looped over. But I care about shaders a lot, so I scrapped this approach and I started over. And yes, we do need to create a mesh from scratch to handle this, but the good news with that is there's literally no downside except it's a little more work to set up in the first place. We have our nice edge, and these waves along the top here are coming from the shader, and they all play nicely together. And if you didn't notice, there's even some distortion going on here as well. We're also going to create a nice little tool with handles so that we can actually just drag it around and change our water size very easily. So let's start with the mesh creation first. So we're going to create a script called interactable water and change the water size very easily. So let's start with the mesh creation first. So we're going to create a script called interactable water and open it up. To create a mesh, we're going to need to know how many vertices along the X we're going to need. We want to be able to control the height and width, as well as assign a material to the mesh. And I'll make the number of Y vertices a constant since we only want the top and bottom. Anything else is just wasteful. But while we're here, let's also add a gizmo color because we're going to need that soon enough.
Oh, ये सब भी है. We're also going to want a reference और white color. अच्छा to ठीक है. our mesh renderer, and our mesh filter, Yeah, as well as an understood. array of vector 3s, which will store असल में ये सब सारे features को ले रहा है फिर set for all of our vertices, and an array of ints to store the indexes of the top row of vertices. Now, my goal with this is to make this a nice, easy tool to work with, where we can just create a new game object, drag this script onto it, and have everything just work. So let's make sure that we require a mesh filter, a mesh renderer, an edge collider 2D, and we actually need one more thing. So real quick, create a script called water trigger handler, which is what we're going to use to detect when we've collided with the water, but we'll fill that out at the end. But back in our interactable water, we'll add our water trigger handler as a required component as well. I want our Edge Collider 2D to automatically get set to a trigger when it's added to the game object, so let's set up a variable for that. We'll get that component in the reset function, and then set is trigger to true. Reset gets called whenever a component is added to a game object, and these attributes up here will add those components to our game object once we add this script to the game object. All right, now for the fun part, let's actually create our mesh. So we're going to set up a method called generateMesh. So we'll set our mesh reference to a new mesh, and then we'll handle adding all of the vertices. So if you're new to this, I know it's complicated to have a for loop inside of a for loop. What this means is that for every number of Y vertices, we'll add all the X vertices. So basically we're adding one row at a time. So if we set our number of X vertices to 20, that array's index 0 to 9, meaning the first half, will all ये मेरे दिमाग से ऊपर से जा रहा है, you know? index 10 to 19 will समझ में नहीं आ रहा मेरे को. like I said, one row at a time. That is important to understand for a little bit later. So that's our vertices. Now we need to construct triangles out of those vertices. The triangles are used by the mesh renderer to create a bunch of quads, and each quad is made up of 2 triangles. So we just specify which vertices those सर के ऊपर से triangles जा रहा are है. made from until we've gone through all of our vertices. Dude. And this next part is extremely important if you want to do any shader work or even be able to apply a texture to your mesh. We have to assign the UVs. The UVs are stored in an array of vectors. कर तो लूंगी लेकिन मुझे कितना सब कुछ समझना पड़ेगा डूड. मैं ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकती. मुझे समझना पड़ेगा कि मैं क्या लिख रही हूँ कैसे. या फिर तो ये जानबूझ के कॉम्प्लिकेट कर रहा है. Let's get the mesh renderer and mesh filter components right here. पता नहीं मुझे इस पार्ट को कितना बार देखना पड़ेगा सब चीज समझने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है. While we're at it. Dude. And our triangles and our UVs. And you may or may not need मैं ready नहीं थी इन सब चीजों के Since we लिए. only call this once, we may as well recalculate the normals and bounds in case you want to do anything with those in the future. And finally, we'll set the mesh filters mesh to be this mesh. Now, you can go ahead and call this in the start function, and you could add this to a game object and set the height and width, and it should work just. इसे आज देख लेते हैं, कल हम लोग वाटर का पूरा अच्छे से काम करेंगे. We have to learn, you know. We have to learn. हम इस चीज से, you know, भाग नहीं सकते. We have to learn. ये नहीं कहीं से कुछ भी ऐड कर दिया वो कर दिया. हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज हो रही है, कैसे कौन सी चीजें काम कर रही है. We have to learn. Fine, but I wanted to make this a little bit nicer. मैं सिंपली कैसे करती है. वाटर शीटर वाले कॉन्स्टिट्यूटली मूव करता. फिर जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता तब वो नीचे छेद बनता फिर ऊपर आता. I think animating is more harder than using Unity assets and their components because एक बार चीजें हम लोग इफेक्ट ऐड कर देंगे तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो अपने आप ही वो इफेक्ट शो करेगा. और हम लोग हेड एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें हर एक चीज को एनिमेट करना पड़ेगा. यू नो, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए अलग से यू नो इफेक्ट को एनिमेट करो. फिर खत्म हो रहा है तो उसके लिए उसे हटाओ. तो आई थिंक using Unity component is more easier than animating the whole process, and animating whole process
is, very stupidity when we have something very easy in Unity. So I think I am gonna prefer Unity 1 and I'm gonna learn it. मुझे पता है मेरे दिमाग का भाजी पाला होगा, बट ओके, मैं आज इतना के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना है घर पे। तो ये वाला वीडियो देख लेते हैं, then I am going to shut down the PC. आज मेरी बॉडी बहुत थकी हुई है यार। To work with, which means a custom editor script to get a few buttons and handles working. I'm not going to spend too much time on this because it's not really important for this tutorial, it's just some quality of life stuff. But we will need to add these 3 namespaces first. एक मिनट पहले ना हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। Fall like gorgeous. Add buttons within बहुत कुछ सीखने वाले भाई इस वाटर में। This video was recorded using this tab button is being nice to feel. Looks like it does affect the head's line. So that ends some type of good tutorial, but my fingers, मतलब लोग इसे देख करके सीख के ट्राई भी कर रहे हैं, तो we have to do this। कल मैं एकदम ज्यादा टाइम लेकर के आऊंगी, मुझे पता है इसमें 3-4 घंटे मुझे लग जाएंगे बनाने में, तो मैं कल ज्यादा टाइम लेकर के आऊंगी और करेंगे। मतलब इसमें बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम हर एक चीज को समझेंगे कि उसने क्या किया, क्यों किया, तभी हमें बनाना भी आएगा। आज भी फिर से स्टिकी नोट्स नहीं है क्या? Thanks a lot. I was looking for this. Also, can you please make a tutorial about creating some escape sequence in the game? I am longer need to search good for tutorial and I want and it's not channel next team. Fantastic tutorial for the game. I'm definitely going to try this when I get home, and I'm definitely be joining MiniBoxShooter again. What's happening? I already had such a new recommendation with copy. Get it to show a great semi course, some inaccessible. Really good. In some inaccessible heavens, my level of programming is also information in the game. And with this video, you give parts to a whole series of small shadow puzzles. So much else. Thank you. I actually do have a small system where the player tread at the surface of the water and gonna help some of this. And for this tutorial, I'm just going to add a separate class down here. We'll make it inherit from editor, and we'll make it a custom editor type of our class name from above. And let's get a reference to that script and set it as the target in onEnable. And now to get our buttons, we'll call override visual element create inspector GUI. बाप रे, ये सब चीजें मैंने सुनी भी नहीं है। कैसे करूँगी मैं? I can do, कितना सब कुछ सर्च करना पड़ेगा। We'll add some space here. And create a button. अभी ये सब चीजें स्ट्रेंज लग रही हैं। जब कल मैं करने बैठूंगी ना, इतने कुछ सीखने को मिलेंगे कि सब चीजें एकदम दिमाग में आने लग जाएंगी और सब चीजें says generate mesh, which calls the mesh method from above. And I also want to create a button that automatically sizes our edge collider 2D for us, but we don't have a method for that, which calls the generate mesh method from above. And I also want to create a button that automatically sizes our edge collider 2D for us, but we don't have a method for that yet. So up here, create a public method. And this edge collider will just be 2 points. So we'll calculate those points based on the position of our top left and top right vertex.
ये क्या लिख दिया इसने? Any offset if there is any. क्या लिख And दिया then set our edge collider इसने? points to be that new array of points. New Okay, points. so back down here, we'll create a second button that calls that method as well. And then return the root visual element. And we need to create one more method, which is going to be used in our function that creates the handles. हमने scene वाला use किया था. And Okay. for the actual handles method, I'm not going to type all of this out. I've Oh, just wow. copied and pasted it over. But basically, we're drawing a wire cube around our mesh area, setting up the size, snap settings, and position of our handles. And then creating the handle one by pasted it over. But basically, we're drawing a wire cube around our mesh area, setting up the size, snap settings, and position of our handles. And then creating the handle one by one for each corner. And if the GUI changes, we call generate mesh so that it always updates as we drag the handles around. So now, if we are starting completely from scratch, you can create a new game object. Water mesh. You can add this script to it, set the material, Right. and hit generate mesh. Now we can drag the size around. And you'll notice if we change this to shaded wireframe mode, you can see all our vertices and triangles in there, and it's looking really Yeah, I can see. Okay, so next I want to switch gears and go into shader mode to get this water looking pretty. Yeah, shit. So I'm going to create a new sprite unlit shader graph. At least animation बनाने से तो ज़्यादा easy है, क्योंकि animate में सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ effect add कर दो. And create a material from that. And let's add it to our script here. And open that up. So I'm going to create a new sprite unlit shader graph. And create a material from that. And let's add it to our script here. क्या किया इसने? If we change this to shaded wireframe mode, you can see all our vertices and triangles in there, and it's looking really nice. Okay, so next I want to switch gears and go into shader mode to get this water looking pretty. So I'm going to create a new sprite unlit shader graph. And create a material from that. And let's add it to our script here. And open that up. So let's add a texture and we'll sample it. Texture 2D. अभी सब कुछ strange लग रहा है जब बनाने हम लोग जाएंगे ना. So we're going to create a category called line. And just in case you don't know, when you're creating a new property, if you first select your category, your new property will get added to that category to save you a little bit of time. So add a float slider. Default is 0.985 from 0 to 1. And add a line color. Default it to some light blue shade. Now to get this showing up only at the top, add a UV node. We're going to split it and plug the G, which holds the y-axis, into a step node. We're going to make the line length the edge, and now we can control how much of a line we have. If you want it to be smoother, then you could plug this into a smooth step node instead. And now let's color this by multiplying it with our line color. Now, to make sure that we get this as a pure color and not just a tint on top of our texture, what we're going to do is subtract this line out of the texture. Now we want a color for the body, so set up a new category called body. Add a body color and default it to blue. As well as a float slider for the body transparency, defaulted to 1 from 0 to 1. Now use multiply to color this white portion. And for now, let's add those two together and plug them into the color.
And you can plug in the textures alpha into our alpha. Okay, now to get this looking a lot nicer, let's create a category called caustics. There are enough properties to set up here that I'm just going to show each one on screen for a second, so pause if you need to and copy down the values. Now, when it comes to shaders, I do find it easiest to work with something visual and then kind of go backwards from there. So let's create a Voronoi node. Plug in your caustic scale here. For the UV, we want lots of control there, so let's plug in a tiling and offset node. We can plug our caustic tiling into the tiling input. And for the offset, let's make a time node and multiply that by our caustic scroll direction. I also want control of the angle offset, so from that same time node, first of all, add a simple float like 5 to it. That way, at the start of the game, you won't have this weird perfect grid on your Voronoi before all the cells actually offset. Then multiply that with our caustic offset speed. Now to control how much black actually shows up, plug this into a power node, and we'll use caustic power here. And to control the strength of this, let's actually multiply this by caustic strength, which will only affect the lighter portions. And to color it, we'll multiply that by our caustic color. Now, I don't really want this affecting our edge line, so let's add this here with our caustics. And then add that result with our edge. सोचो जब मैं ये करने जाऊंगी तो ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है भाई। Oh wow! Now for the distortion, create a new category called distortion, and again I'll just show my values here for a second each. Wow! But we need one more thing, which is another texture property. It's important that this is named exactly, so make sure this is camera sorting layer texture. Capitalization matters, so make sure it's exact. And this will not work if it's exposed, so uncheck that. You can only see the results of this in the scene view, not so much in the shader graph, but think of this like a render texture, but you don't need another camera. Everything on screen that is included in sprite sorting layers that we'll define in just a minute will get rendered automatically to this texture. We can then take that texture and do things with it, like add some distortion in this case. So drop that texture in and sample it. And again, let's add in a Voronoi node. For the UV, we want a tiling offset so that we can scroll the Voronoi a little bit. So create a time node, multiply it by our distortion direction, and that will be our offset. Time node. For the Voronoi's angle offset, let's multiply this time by our distortion offset speed and plug that in. बाप रे, सोचो इस इंसान ने कितना बार इस चीज को बनाया होगा। अपने लाइफ में उसने कितनी बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर उसे पता होगा कि क्या कौन सी चीज कैसे करते हैं। Scale, just plug in the scale. We want to multiply this by a strength, a very, very weak one. And finally, we want to take our screen position and add our Voronoi result onto it. That will be our UV input for our camera sorting layer texture. And finally, multiply the color of this with our body transparency. And we want to add this result way over here with the result of our caustics and edge body, everything together, and plug that into the base color. Now, once we do that, you can see there's no distortion happening. So find your 2D renderer and go to your camera sorting layer texture option here. What this will do is render everything from the top of the list to whatever layer you actually select here onto a texture. There's no list right now because I only have one, so I'll just go ahead and select default. But basically, you want to select your foremost, meaning the lowest on your sorting layer list here, because then we're going to go to our game object here and add a sorting layer group component to it. And we need to create a new sorting layer because we don't want this thing to be included in the render texture. That's why it looks so messed up right now. So now we'll set this to be on that new layer, which means all other sorting layers besides this sorting texture layer we just created is being drawn to this sorting layer. So now it's no longer interfering with itself.
And you can see there's some nice distortion happening in the water now. Yes. There's just one more quick note. Using this usually goes very smoothly until you need to add a second camera into your game for some reason or other. Then things can start to get a bit complicated when you've got other cameras overlaying on top of your main one. So what you might need to know is that in your universal render pipeline asset, you can actually add a second 2D render asset in there. You can have one with a camera sorting layer texture and one with it disabled. And then in your cameras, you can actually select which renderer each individual camera uses. So knowing this little trick can save you a lot of headaches down the road if you have a project with multiple cameras in it. Okay, now if you're interested in vertex displacement for some simple shader waves, let's do that real quick. We're going to start with a position node set to object space, and we'll split it. Put the red back into the R channel on a combine node, as well as the blue. It's the G, or again, the Y axis that we need to worry about. And this is the last set of variables for the shader. I promise, call this category waves. Here are the 4 of them. I'll show them on the screen real quick again. So create a time node. First, we want to multiply our wave speed by our wave direction so that we can control whether they flow left or right. And multiply that by our time node. Now we want to add that result with the red channel over here. That part still confuses me a little. I kind of just got it through trial and error, but I assume it's to get our sine wave flowing in the X direction. Next, we multiply that with our wave count. And finally plug that into a sine node, which we multiply with our wave size variable. Okay, so this is great and all, but we need to mask out the bottom so that this only affects the top of our mesh. Otherwise, the entire mesh is going to wave and it's going to look really stupid. So add a UV node and split it. And if you preview that, you can see it's black along the bottom, which means it will not be included because black equals 0. And we're going to multiply this by our sine wave up here, and 0 times anything equals 0. With our y-axis up here, the wave pattern finally. So plug that back into our combine node, and finally plug that into our position in the vertex. And there you go with the shader. So play around with the settings, but the one thing I'll point out is there's basically 2 ways to control the alpha of the water. You can use the body transparency, which really just starts to drown out our camera sorting layer texture as it gets lower, and it fully shows everything at full transparency with a color tint on top. But if you want to make that color tint more clear, move the color mode towards the black side, and it gets more and more but fully clear with the caustics looks pretty cool too, I think. Anyways, let's actually create the interactive waves now. So first we'll need some variables for the springs. We're not adding spring joint components or anything like that. We're going to do the calculations per vertex ourselves, but you can think of each individual vertex as being a spring. And when our player collides with the edge collider, we determine which vertex he's close to, activate those springs, and propagate that out and dampen it over time so that it gets weaker. That's the basic idea behind how this is going to work. We're also going to need controls for our force and our collisions as well. And to make this more straightforward, at least it does for me, let's add a private class called waterpoint and make it store a velocity, position, and target height float. And then we can create a list of that class. This is just going to make our loop a little bit neater looking. Now we need to populate this list. So in start, first actually we need to get a reference to our edge collider before I forget, but let's also call a method called create water points. And now let's actually create them. बहुत दिन से मैं पूछ रही थी ना कि बहुत इजी है अब मेरी फटे के 5 हो गई है मुझे सीख तो जाऊंगी ठीक है इतना मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कर लूंगी मुझे समझ में भी आ जाएगा मैं सीख भी जाऊंगी बस लेकिन जो सीखने की प्रोसेस में मेरी फट के 5-6 होगी वो बात अलग है जो मेरे दिमाग का भाजी वाला होगा वो चीज है So first we clear the list. क्योंकि छापना तो है नहीं मेरे को छापने को तो कोई टेंशन ही नहीं होगी बट जो समझने में मेरी फटके 5 होगी मेरी वो बात अलग है यू नो समझ के ही करना है छाप तो सकते नहीं है सीखना है हमें तो फटके तो 5-6 होगी for every top vertex लोगों की 4 होती है मेरी 5-6 होगी and while we're at it we'll set the position to be the y position of the top vertex and make the target height the same as well. Now, I experimented with this for so long, but I did find that the best and most consistent results came from running this in fixed update. Plus, I like doing it this way because it's a little bit more performant than update because it just runs a little less frequently. मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसने क्या यूज किया ये सब यूनिटी के टूल्स हैं ठीक है यूनिटी के कीवर्ड्स हैं यूनिटी का यूज करते हैं यूनिटी की स्क्रिप्टिंग है मुझे यूनिटी की स्क्रिप्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है बहुत ही बेसिक लेवल की आती है जो मैंने करने को दिखाया था वो भी पूछ के कौन सा कैसे करते हैं और सीखा था और समझा था ये जो भी यूज कर रहा है मैं सर के ऊपर से जा रहा है I think this is still better than watching Unity tutorials and yeah क्योंकि Unity tutorial देखने के बाद भी मैं इस चीज को सर्च करती कोई मतलब speaking. So in here there are just 3 little things we need to do. We need to update all the spring positions, फिर दिमाग से निकल जाता update the mesh. To update all of the spring positions, we'll loop through all of our water points. But notice we're starting at index 1 and subtracting 1 from the count. We're doing that because we want to exclude the top left and top right vertices. We want to stay put. I'll link an article in the description that explains all the detail with this method. It was written for Microsoft XNA, but the core math concepts remain very much the same. So I'll get a reference to a point, calculate a float, that's our current position, minus our target height, which was our starting position. Calculate acceleration, and here's the formula for that. And then we'll increment our point's position by our velocity, multiplied by time of fixed time, and our speed multiplier. Then we'll move the actual vertex, and increment our velocity by our acceleration with our fixed delta time and speed multiplier in mind again. Now for the wave propagation, we do 2 loops. One is our number of iterations, which increases the speed, and then we do that for each water point. Again, notice we start I at 1 and we subtract 1 from the count of the water points. So we're going to calculate our left and right deltas like this. And then finally we update our mesh vertices to be equal to an array of vertices so that they actually move.
Okay, now to get any force actually applied to the water, we need to create a splash method. And for that, we're going to need to know if certain vertices are inside a circle around whatever's hitting our water, in this case our player. So here's how we can find that. Now for the splash method, I calculated the radius as the extent of the collision bounds on the x, collision referring to the object that hit our water, and then apply a multiplier to it, so that we have some control of the radius. This is especially important if you don't use a lot of vertices on the x. The center can just be the collision's transformed opposition, and from there we loop through all the water points to check if they are inside of the circle. Now to do that, we need to translate our vertex positions back into world coordinates, which we can do like this. And then if it is inside the circle, then the velocity of that water point will be equal to force. Finally, we just need to call the splash method from somewhere, and we're going to do that from our water trigger handler script. So in here, we're going to need a water mass, and some particles if you want some, as well as a reference to our edge collider and our interactable water. Let's grab those and awake. And we made our edge collider 2D a trigger, so let's call on trigger enter 2D. We'll use a bitmask operator to check if what we collided with is within a certain layer mask. मेरा दिमाग बहुत ही डेवलप होने वाला है ये सब सीख के And if it is, we'll try to get a rigid body. I have to call get component in parent based on where my rigid body is located on my player, change that to whatever way you need it, or maybe add some extra checks to cover all of your bases. But either way, if the rigid body is not null, then we'll spawn in some particles. Mine looks like this. Since my player can jump around in the water, I want to know if he's hit the edge collider from above or below, but you may or may not need that. And then even though we have a force multiplier in our other script, we also have a max velocity, which is just kind of a little safety net, so your water doesn't go berserk if you throw something in it that's moving a little too fast. So we're clamping the force like this, while also applying our force multiplier. And then finally call the splash function. Make sure you set your water mask to only interact with. Finally call the splash function. Make sure you set your water mask to only interact with whichever layers you like, and assign some particles. So you should now have some really interesting water that interacts with whatever it is you're throwing into the water. A fair warning though, even though this is a fairly straightforward approach to water, well, straightforward for water anyways, certain values can cause your springs to gain energy to the point where stiff springs can basically explode. The key with this method is to find a balance between what looks good and what won't. सब्सक्राइब कर देते मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, मुझे तो ये वाला भी चाहिए, ये वाला कितना ज्यादा अच्छा है यार, इसकी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन तो शॉर्ट वीडियोस डाले इसमें, इसे डालना चाहिए था ज्यादा। चलो आज के लिए इतना ही सही है, मुझे जाना है नहीं, अब मुझे खाना बनाना होगा, फिर बच्चों को भी खाना देना है, फिर बाहर पानी डालना है ताकि जितने भी तापमान है वो कम हो जाए, ताकि बाहर अच्छे से रह सके। मम्मी ने बोला है। और फिर आऊंगी, फिर कुछ शीशा पे क्वेश्चंस लगाऊंगी, क्वेश्चंस लगाने के बाद कोचिंग जाऊंगी, कोचिंग से आने के बाद फिर खाना बनाऊंगी, फिर रॉब्लॉक्स के लिए बैठूंगी। डेली 1 घंटे में काम कर लूं। एटलीस्ट आई शोड अप, एटलीस्ट आई शोड अप फॉर माई सेल्फ। सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, चाहे थोड़ा मोड़ा करूं। आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। कल आएंगे, कल ज्यादा समय लेके बैठूंगी, कल सुबह से ही कल सोच रही हूँ 3-4 बजे, सुबह 3-4 बजे से ही लाइव करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा सीखने में, पूछने में, क्योंकि छापने में तो वक्त नहीं लगेगा, छापने में मान लो 1 घंटे लग जाएंगे देख देख कर, लेकिन उस चीज को लिखना है, फिर सर्च करना है क्यों हो रहा है, वो सर्च करके पढ़ना है, देखना है, तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। मान लो 1 दिन का 5-6-7-8 घंटे का वक्त लग जाएगा, जो मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन वो अर्थित होगा, आज मैं पक्का स्टिकी नोट्स खरीद के लाऊंगी और लिखूंगी, क्योंकि अब तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है और मैं इस चीज को बार बार नहीं सीखना चाहती हूँ। मैं इस चीज को बार बार नहीं सीखना चाहती, मैं एक बार सीख के नोट्स बना के रख लेना चाहती हूँ अच्छे से, ताकि मेरे दिमाग में रहे। और
जो दिमाग में रहेगा। इतनी मेहनत में हर बार नहीं कर सकती ना, करना नहीं चाहती मैं। उस बार 3D में सीखना तो आसान हो ही जाएगा, क्योंकि सेम ही होगा शायद, और सेम नहीं भी होगा तो एटलीस्ट सिंपल होगा, एक्सपीरियंस होगा मेरे पास। सो चलो करते हैं। ओके, बाय बाय।